91. Okay. धर्म प्रोजित कैतव अत्र परमो निर्मच्चराणां सतां नित्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते मामुनि कृते किं वा परेश्वरः सद्य दुहि अवरुध्यते अत्र श्रुतिभिः सुश्रुतिभिः तत्क्षणात्। The great scripture Srimad Bhagavatam, compiled by Mahamuni Vyasadeva from 4 original verses, describes the most elevated and kind-hearted devotees and completely rejects the cheating ways of materially motivated religiosity. It propounds the highest principle of eternal religion, which can factually mitigate the threefold miseries of a living being and award the highest benediction of full prosperity and knowledge. Those willing to hear the message of the scripture in a submissive attitude of service can at once capture the Supreme Lord in their hearts. Therefore, there is no need for any scripture other than Srimad Bhagavatam. Yes, Srimad Bhagavatam. There is nothing more required than Srimad Bhagavatam. Yatha Vaishnavanam Priyam, very dear to Vaishnavas, because they are very dharma projita paitava, very clean. तार मध्य मुख्य वांछा पैतव प्रधान most cheating propensity is मुख्य. I am liberated. That is the most cheating. धर्म cheating धर्म अर्थ काम तो चलेगा, पर पैतव ये टॉप मोस्ट इज धर्म. तुम चाहते हो लिबरेशन होने के लिए? नो. तार मध्य मुख्य वांछा पैतव प्रधान जायते कृष्ण भक्ति हय अंतर्ध्यान. अगर तू इच्छा करेगा मेरे को मुक्ति चाहिए बोल के वो कृष्ण भक्ति का अंतर्ध्यान हो जाएगा उसका दिमाग से. प्रशब्देन मोक्षाभिसन्धिरपि निरस्तः इति. प्र ये जो प्र धर्म प्रो प्र ये जो प्र तार मध्य मुक्ति वांछा ही प्रधान कर्तव्य बा कपटता. तेणु स्वामीपाद प्र शब्द प्रयोग मुख्य अभिसंधि रूपक कैतव रहित धर्म उल्लेख करछन्ति. पढ़िएगा मीनिंग कहला. The foremost process of cheating is to desire to achieve liberation by merging into the Supreme. For this causes the permanent disappearance of loving service to Krishna. No. For this causes the permanent disappearance of loving service to Krishna. माने सेवा नहीं करना उनसे मिलित हो जाने का. The next. The prefix pra in the verse from Srimad Bhagavatam indicates that the desire for liberation is completely rejected. Dharma projita with this pra, this suffix pra is indicated. There is prati sabd prati akhya nana artha hai. Srimad Bhagavatam one should study from Vaishnava. ठीक है. So this dharma projita means completely operating. Completely means this kaitav dharma is that moksha. Understand? Don't be disturbed. It's Bhagavatam. Study 94. 94. कृष्ण भक्ति बाधक जत शुभाशुभ कर्म एक जीवेर अज्ञानतम धर्म. कृष्ण भक्तिर बाधक जत शुभाशुभ कर्म. अच्छा काम करेगा स्वर्ग जाएगा. ये शुभ ये भल काम ये खराब काम ये ये जो कृष्ण भक्तिर बाधक जत शुभाशुभ कर्म से एक जीवेर अज्ञानतम धर्म. दैट ओनली जीवेर अज्ञान धर्म. एक्लिप्स ये भी इसे याद आता है. एक्लिप्स होता है तो पूजा नहीं करेंगे. नो, एक बाधक कृष्ण भक्ति बाधक. तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी कहते नहीं भक्ति जो करना है कृष्ण को करना है. एक्लिप्स होता है एकादशी भगवान जी के लिए नहीं. एकादशी पर यू भगवान भोजन करेंगे. कृष्ण भक्ति जितना बाधक कृष्ण भक्ति बाधक जब तो शुभ अशुभ को ये शुभ काम या अशुभ काम ये करेंगे या ना करेंगे ना.
यही सब जीवेर अज्ञानतम धर्म, ये जीवेर अज्ञान है सब। कृष्ण भक्ति इज टॉप मोस्ट। যাহার প্রসাদে তম হয় নাশ, তম নাশ করি করে তত্ত্বের প্রকাশ। এই যে প্র এই ওয়ার্ড, যাহার প্রসাদে এই তম হয় নাশ, তম নাশ করি করে তত্ত্বের প্রকাশ। तत्व विषय वस्तु क्या है? तो वस्तु, वस्तु निर्देश नहीं लिखा है, नेक्स्ट लाइन है तत्व वस्तु, वस्तु तत्व वस्तु कृष्ण, कृष्ण भक्ति प्रेम रूप, नाम संकीर्तन सर्व आनंद स्वरूप। आप पढ़िए 94, 95, 96। All kinds of activities, both auspicious and inauspicious, that are detrimental. Detrimental means that will not favorable for Krishna bhakti. That are detrimental to the discharge of transcendental loving service to Lord Krishna are actions of the darkness of ignorance. By the grace of Lord Chaitanya and Lord Nityananda, this darkness of ignorance is removed and the truth is brought to light. The absolute truth is Sri Krishna, and loving devotion to Sri Krishna exhibited in pure love is achieved through congregational chanting of the holy name, which is the essence of all bliss. नाम संकीर्तन सर्व आनंद स्वरूप। सूर्य चंद्र बाहिर तमन तमसे विनाशे, वही वस्तु घट पट आदि से प्रकाशे। सूर्य चंद्र जब रहेंगे तब हम in sun and moonlight, then we can see the things as they are. दुई भाई हृदयर ख्याली अंधकार, दुई भागवत संगे करानो साक्षात्कार। पढ़िएगा मीनिंग। The sun and the moon dissipate the darkness of the external world and thus reveal external material objects like pots and plates. But these two brothers, Lord Chaitanya and Lord Nityananda, though they didn't come from one mother, but still they are two brothers. Two brothers, yes. This I had a misconception कि वो एक ही सच्ची माता के गर्भ से दोनों आए. But these two brothers, Lord Chaitanya and Lord Nityananda, dissipate the darkness of the inner core of the heart, and thus they help one meet the two kinds of Bhagavatas, persons or things in relationship with the personality of Godhead. There are two types of Bhagavad. One is Bhakta Bhagavata, one is Grantha Bhagavata. तो दोनों चीज भगवत ये दोनों भाई देते हैं कृष्ण बलराम। एक भागवत बड़ो भागवत शास्त्र, आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। जो भक्त ये पात्र है ना, if there is a पात्र, you will be drinking something, you need a पात्र, that पात्र is भक्त भागवत, and the object what you are drinking, that is भक्त Srimad Bhagavatam. One is भक्त भागवत, one is book Bhagavatam, Grantha Bhagavatam. One of the Bhagavatas is the great scripture, Srimad Bhagavatam, and the other is the pure devotee absorbed in the mellows of loving devotion. दुई भागवत द्वारा दिया भक्ति रस, ताहार हृदय तारो प्रेमे होय बस। दुई भागवत द्वारा दिया भक्ति रस, ये चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद को क्या किए ना, दुई भागवत द्वारा दिया भक्ति रस, ये दुई भागवत के भक्ति रस दिए, तार हृदय तार प्रेमे होय बस, और भगवान उनका प्रेम में ही बस हो जाते हैं। एक अद्भुत समकाले दोहार प्रकाश, अद्भुत एक समय में दोनों आ गए। एक अद्भुत समकाले दोहार प्रकाश, आर अद्भुत चित्त गुहार तम करे नाश। और नेक्स्ट अद्भुत क्या है, चित्त के अंदर जाके जितना डार्कनेस है तम अंधकार नाश करते हैं। ओके पढ़िए दोनों 100 and 101.
Through the actions of these two Bhagavatas, the Lord instills the mellows of transcendental loving service into the heart of a living being, and thus the Lord, in the heart of his devotee, comes under the control of the devotee's love. Wait. Next one. The first wonder is that both brothers appear simultaneously, and the other is that they illuminate the innermost depth of the heart. अनुकंपार्थम अज्ञानजतम नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भासता। भगवान जी अनुकंपा करके हृदय में अंदर जाते हैं और ज्ञान दीप देके उसका तमो नाश करते हैं। दैट इज अनुकंपा। एक चंद्र सूर्य दुई परम सदय जगतेर भाग्ये गौड़े करिल उदय। ये चंद्र सूर्य चंद्रोदय मंदिर बना रहे हैं हमारा गुरुदेव। चंद्रोदय श्री चैतन्य महाप्रभु चंद्र और सूर्य नित्यानंद प्रभु चंद्र सूर्य दुई परम सदय। At the same time, Nitayar Padakam Chandra Supita. Yes, Nityananda also gets Chandra. Pulling with. His lotus feet is compared to Koti Chandra. Koti Chandra Supita. So it is possible. এই চন্দ্র সূর্য দুই পরম সদয় জগতের ভাগ্যে গড়ে করিল উদয়। জগতের ভাগ্য এই গড়দের উদয়। সেই দুই প্রভুর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভিষ্ট পুরাণ। ये दुई प्रभु को चरण बंधन करेंगे तो जितना विघ्न नाश हो जाएगा और अभिष्ट दो टाइप, एक विघ्न नाश होगा एक अभिष्ट पूर्ण होगा। These two, the sun and moon, are very kind to the people of the world. Thus, for the good fortune of all, they have appeared on the horizon of Bengal. Okay. Let us therefore worship the holy feet of these two lords. Thus one can be rid of all difficulties on the paths of self-realization. तेनो अगर भक्ति चाहिए तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु पकड़ लेने का बस that is the only way to get Krishna. Directly one cannot approach him. এই দুই শ্লোকে কইল মঙ্গল বদন তৃতীয় শ্লোকের अर्थ सुन सर्वजन। हे सर्वजन, नाउ मैं थर्ड श्लोक में बोलने वाला हूं, प्लीज हियर इट। वक्तव्य बाहुल्य ग्रंथ विस्तारेर डरे विस्तारी ना बनी सारार्थ कहि अल्पाक्षरे। वक्तव्य बाहुल्य एलाबरेट, वक्तव्य बाहुल्य में एलाबरेट में करूंगा तो ग्रंथ बड़ा हो जाएगा। ग्रंथ बड़ा नहीं करना चाहता हूं मैं, इसलिए स्वल्प अक्षर में बोलना चाहता हूं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी by that time he had become very 100 plus, very old, so his things are not steady, hand is not steady, mind is not steady, so he is saying his deficiency of his body, so anytime he can leave the body, so he want to quickly complete it. So in the beginning chapters you see even Antavila also he has told in the Madhya Song. Then he is telling if I am active I will be able to write, then I will tell you details in Antavila later. Finally completed. So anytime body he can leave the body. So Prabhupada says, I am already old person, I cannot administer you. You have to be corrected yourself. He still do eternals. I have invoked the benediction of the Lords with these two verses, text 1 and text 2 of this chapter. Now please hear attentively the pure purport of the third verse. Okay. अनादि व्यवहार सिद्ध प्राचीन शास्त्र स्वशास्त्रोक्ति मितंच सारंच वचो हि वाग्मिता इति। सांख्य करे सार कथा प्रतिपादन को वाग्मिता कहा जाए। मतलब precisely if you tell something that is known as वाग्मिता, not in essay way, precisely, precise. सुनीलेखंडी वे चित्तेर अज्ञानादि दोष कृष्ण गाढ़ प्रेम हवे पाइबे संतोष। Now if you hear the third sloka, then सुनीते खंडी वे चित्तेर अज्ञानादि दोष,
अज्ञान आदि विभिन्न प्रकार दोष है चित्त के अंदर, वो क्या कृष्ण का और इसका खंडन करेंगे और क्या करेंगे, कृष्ण गाढ़ प्रेम हो गए, कृष्ण को गाढ़ प्रेम, यू विल लव कृष्ण वेरी स्ट्रांगली एंड बाय द संतोष यू विल बिकम पीसफुल। श्री कृष्ण नित्यानंद अद्वैत महत्व तार भक्त भक्ति नाम, तार भक्त भक्ति नाम प्रेम रस तत्व। श्री चैतन्य नित्यानंद अद्वैत प्रभु ऑल महत्व, तार भक्त डिवोटीज ऑफ हिम इज नोन एज भक्ति नाम प्रेम रस तत्व। I purposely avoid extensive description for fear of increasing the bulk of this book. I shall describe the essence as concisely as possible. Essential truth spoken concisely is true eloquence. Essential truth spoken concisely is true eloquence. Eloquent means very nice. If you precisely tell, it will be nice. Simply hearing submissively will free one's heart from all faults of ignorance, and thus one will achieve deep love for Krishna. This is path of peace. If one patiently hears about the glories of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Nityananda Prabhu, the and path of peace means that point, that sloka three things are there. Sunile khandive chitra ajnana dosa. If you hear Sri Chaitanya Charitamrita, third sloka, all the ajnana will go off. Number one. Number two is that Krishna Gada Prem hoega. Number two, and number three is by the that Santosh will get bliss. If one patiently hears about the glories of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Nityananda Prabhu, and Sri Advaita Prabhu, and their devotees, devotional activities, names, and fame, along with the mellow of the transcendental loving exchange. Okay. One will learn the essence of the absolute truth. Therefore, I have described this in Chaitanya Charitamrita with logic and discrimination. I have read 109 also. You read this? 109. 109. I will be studying now. भिन्न भिन्न लिखियाछि करिया विचार सुनिले जानिबे सब वस्तु तत्व सार। भिन्न भिन्न लिखियाछि करिया विचार, considering this I have written differently. सुनिले जानिया सब वस्तु तत्व सार. If you hear it attentively, then you will understand वस्तु तत्व. What is the वस्तु तत्व? श्री चैतन्य महाप्रभु वस्तु तत्व. श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री श्रीला रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी पदे जार आस श्री चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। कृष्णदास कविराज गोस्वामी is telling, see, I am taking the shelter of Srila Rupa Goswami and Srila Raghunath Das Goswami. Praying at the lotus feet of Sri Rupa and Sri Raghunatha, always desiring their mercy, I, Krishnadasa, narrate Sri Chaitanya Charitamrita following in their footsteps. Thus end the Bhaktivedanta purports to Chaitanya Charitamrita Adi Leela, first chapter describing the spiritual masters. इति श्री चैतन्य चरितामृते आदि खंडे गुरुवादी बंधन मंगलाचरण नाम प्रथम परिच्छेद। प्रथम परिच्छेद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय Krishna
श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री रूपा की जय।